हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय डीजी। आज आम डिस्कसन करवा 2024 रो जो ओपीएससी पीजीटी एग्जाम है से फिजिक्स रो जो 100 क्वेश्चन पेपर वन पड़ता तार डिटेल सॉल्यूशन बट 100 क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन गोटे वीडियो रे कवर अप करी होबनी से पार्ट वाइज माने सब्जेक्ट वाइज और पेपर वाइज आम वीडियो को स्प्लिट करूँ। सो फास्ट वीडियो रे माने ए वीडियो रे मु क्वांटम मेकानिक्स रो डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करी। सो जो एग्जाम हेतिला सेथिरे 100 क्वेश्चन रो 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन होची क्वांटम मेकानिक्स रो थिला। तो से क्वेश्चन गुडा डिटेल मु डिस्कस करू जेबे। सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन हम कोन देखाउ जी स्क्रीन रे द व्हिच द फॉलोइंग फंक्शन इज एन आइगन फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। So eigenfunction पहले condition कौन suppose a operator a cap when operate on a wave function psi then it gives some eigenvalue and the function repeats itself, then हम कहवा psi is an eigenfunction of operator a cap with eigenvalue some a। ठीक अच्छे। सो से कौन क्वेश्चन देछि ना एक्सकेप रो पचार पोजीशन ऑपरेटर रो। सो एक्सकेप व्हेन ऑपरेट ऑन साई बट साई इज इन मोमेंटम स्पेस। ओके सो साई ऑफ पी। तो ऑप्शन ने पर चारटा ऑप्शन अच्छी तो चारिटा ऑप्शन रो वेव फंक्शन दे चारटा ऑप्शन रे। ठीक अच्छे। तो सेठी हमें ऑप्शन को पुट करी देखिया। तो एक्सकेप को हमें जदि हम मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन लिखिया सी हम केते ना आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल पी। सो हमें फास्ट ऑप्शन को हम चेक करते escape when operate on psi of p, that is escape means iota h cross del by del p of psi of p first option में कितने होची ना cos p plus iota sin p। so that's equal to लिखु छी iota h cross cos p रो डेरिवेटिव कितने ना minus sin p plus iota sin p रो कितने ना cos p। so that's equal to multiply कर दियो माइनस आयोटा एच क्रॉस साइन पी और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बोल माइनस हो माइनस के कॉस पी। तो बर्तमान माइनस एच क्रॉस जब मुझे कमन नेउजी ताले हेगला केते ना कॉस पी प्लस आयोटा साइन पी। देखो ये फंक्शन अगेन रिपीट है। सो आम लिखे एक्सकेप व्हेन ऑपरेट ऑन साई ऑफ पी इट गिव्स माइनस एच क्रॉस साई ऑफ पी। So psi of p, that is option 1, is an eigenfunction of escape. So E2 out of 4 option first option is correct। बाकी option check करिया दरकार नहीं। चेक जनरली करि परियो बाकी option sin p रो केते cos p होबो जोरा कि अगेन रिपीट होनी। सिमिलरली बाकी c और d को भी निजे चेक करि परियो सिमिलर मेथड रे। सो ये option 1 is और option A is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हैमिल्टनियन तुम गिवन होची क्लासिकल हैमिल्टनियन दैट इज h इज ओमेगा x p। सो सेठी क्वांटम मैकेनिक्स रे तार रिप्रेजेंटेशन पचारि छी माने जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैमिल्टनियन इन फॉर दिस क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन पई क्वांटम रे कोन लिखा जाय पारे। सो हमें समस्त जानि चंदी क्लासिकल मैकेनिक्स रे मल्टीप्लिकेटिव मैंने ऑर्डरटा मैटर कराइनी दैट इज एक्स पी इज इक्वाल टू पी एक्स यू कैन राइट बट क्वांटम मैकेनिक्स से मैटर करे। ठीक अच्छे। सो क्वांटम मैकेनिक्स से जनरली हमें एस्केप को हमें लिखि पारिबा ओमेगा बाय 2 एक्स केप पी केप प्लस पी केप एक्स केप। ठीक अच्छे। तो तार यार जदि हमें इक्विवेलेंट ऑपरेटर बाहर करिबा जोरा हम लिखि लेबे एक्स केप पी केप प्लस पी केप एक्स केप तो ताको में ऑपरेट करबा पड़ो वेव फंक्शन ऊपर। सो हमें ऑपरेट करिया व्हेन एक्स एच केप ऑपरेट ऑन साई एनी वेव फंक्शन साई। सो सपोज साई ऑफ एक्स दैट इज सो दिस इक्वल टू कितने ना ओमेगा बाय 2 एक्स केप जो पी केप लिखा है इस जगह लिखिए माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स प्लस हमें ये पी केप जगह लिखिए माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स होल इनटू साई। दैट्स इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस बाहर को नहीं आसवा। सो माइनस आयोटा बाय एच क्रॉस इंटू ओमेगा बाय 2 है। सो एक्स डेल बाय डेल एक्स
मल्टीप्लाई करिया साई सहित मैंने ऑपरेट हम साई सहित नेक्स्ट प्लस आसो डेल बाय डेल एक्स इंटू साई सो दैट्स इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस बाय आयोटा एच क्रॉस इंटू ओमेगा बाय 2 एक्स डेल बाय डेल एक्स साई प्लस ये तो प्रोडक्ट रूल पड़ो सो एक्स रहा डेल साई बाय डेल एक्स प्लस साई रो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 सो ये जो 2 टाइम्स हो सो माइनस आयोटा एच क्रॉस ओमेगा बाय 2 ये 2 टाइम एक्स इंटू डी बाय डी एक्स এটা সাই প্লস সাই নেক্সট আমি কোন করিবা আচ্ছা লেফট হ্যান্ড সাইডে কোন থিলা লিখিবা সেটা h কেপ psi of x h কেপ অপারেট অন psi of x ইকুয়াল টু 2 টা 1/2 টা মল্টিপ্লাই করে দউছি ভিতরକୁ নেই যাଉଛି ওকে সো মাইনাস আয়োটা h ক্রস ওমেগা সো 2 টু কটি যাবটা সো x ইনটু d বাই dx প্লাস হাফ psi तो कंपेयर करले हमें एच केप को हमें लिखी पारिबा इक्विवेलेंटली माइनस आयोटा एच क्रॉस ओमेगा एक्स डी बाय डी एक्स प्लस हाफ ठीक है ये डेल बाय डेल एक्स था ताको डी बाय डी एक्स में लिखिली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बिकॉज एटी मु हमें अज्यूम करछन साई इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स सो डी बाय डी एक्स हम लिखि रही असुविधा नहीं थे ठीक अछि तो एटी देखिए हमें को ऑप्शन टा करेक्ट हो माइनस आयोटा एच क्रॉस ओमेगा x into del by del x plus half okay option A is correct ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट कौन पचारछि थर्ड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तापे पोटेंशियल हमें कौन जानछंती पोटेंशियल v ऑफ x इक्वल टू हाफ m omega square x square all over space that is minus infinity to infinity तो यार करेस्पोंडिंग एनर्जी हमें केते जानछन ना n plus half h cross omega एटा मन रखे हमें पड़िबो ठीक अछि एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब एग्जाम रे हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वेश्चन आसे आ एथिरे भी बहुत सारा क्वेश्चन अछि सो n can take the value 0 1 2 3 and so on For ground state n equal to 0, for first excited state n equal to 1, second by n equal to 2 and third excited state by n equal to 3. So simply हमको third पचो n equal to 3 put कर दियो. So E equal to कहते हैं जो ना 3 plus half h cross omega. That's equal to 7 by 2 h cross omega. So 7 by 2 is the correct answer. Option C is correct. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन दिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द एनर्जी आइगन वैल्यू करेस्पोंडिंग टू द स्टेट साई ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम इज केते देछि सो जनरली हाइड्रोजन एटम रे हम जानछु साई फंक्शन द वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स n l m So comparing with this, we can get n value 4. So हमें समझ जानी चाहिए एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कहते माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर जस्ट n जगह 4 पुट कर दो ताले माइनस 13.6 बाई 4 स्क्वायर कहते 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो इट क्लियरली ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके वेरी इजी क्वेश्चन थिला नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन ये देखो क्वेश्चन 24 नंबर एटा स्क्रीनशॉट नहीं आए तो डिफरेंट सेट अनुसार क्वेश्चन चेंज ऑर्डर में भी चेंज होते पारे तो निजर सेट अनुसार निजे चेक करना है द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी लेवल फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पचाए ओके इन कोडी ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m moving in infinite potential well between 0 to 12 subjected to perturbation this perturbation the d delta function representation अछि okay so that means हमें जानि जंती perturbation theory first order correction to the nth state is represented as bracket of
psi n h dash psi n, and psi n is normalized to unity. Okay, so এটি আমি ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট কাହାର 0 ରୁ 12 ভিতরে যদি পার্টিকল ইন এ বক্স রে আমি জানিଛନ୍ତି ওয়েভ ফাংশন sin x is 2/2l square root sin n pi x by 12 for this particular range 0 to 12 range ପାଇଁ हम फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन एमती लिख परिबा. So n equal to 1 2 3 and so on. For fast excited state n equal to केते हो 2. So हमें से किया psi 2. तो ये psi 2 ऊपर पचार जी. So psi 2 x equal to 1 by l 2 to cancel गला 1 by l sin n plus 2 যদি আমি পুট করিবা তাহলে সে কেতে जो ना pi x by l হবো. ओके, तो नेक्स्ट हमें लिखिबा एनर्जी करेक्शन टू द फास्ट एक्साइटेड स्टेट माने n इक्वल टू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज psi 2 h dash psi 2. फास्ट एक्साइटेड स्टेट पे psi 2 लिखा है ना, ग्राउंड स्टेट होची psi 1 n इक्वल टू 1 पुट कर थांते. तो दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर्मेट लिखिले 0 to 12 लिमिट हमें psi 2 लिखिबा आउ पोटेंस जो परटर्बेशन अच्छी सेटा कहते लैम्बडा v नोड डेल्टा x माइनस l. सो लैम्बडा v नोड डेल्टा x माइनस l इंटू psi 2 इंटू dx. psi 2 स्टार लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बट जेहेतु रियल फंक्शन तो सेम रहेगा psi 2. तो दैट्स इक्वल टू हमें लिखिबा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2l. तो psi 2 स्क्वायर है जो मोड स्क्वायर और psi 2 स्क्वायर है गला. psi 2 स्क्वायर मींस कहते 1 by l sin स्क्वायर pi x by l लैम्बडा n नोट लैम्बडा v नोट बाहर को जाऊ डेल्टा x माइनस l इंटू dx. तो हमें ये हमें l भी बाहर को नहीं परिबा l 1 by l बाहर को नहीं नबा. ओके, सो हमें प्रॉपर्टी जानछन रियल फंक्शन रो यदि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b अछि f of x डेल्टा x माइनस x नोट dx अछि एंड x नोड जो डायरेक्ट डेल्टा पीक टा कोडी अछि x इक्वल टू x नोड रे यदि x नोड टा a रो b भीतर लाई करूची ताहले हमें लिखियो डायरेक्टली दिस इंटीग्रेशन सॉल्यूशन विल बी f of x नोड. ठीक अछि, तो याकु जदि हमें कंपेयर करिबा ताहले डायरेक्ट डेल्टा रो पीक हमें एक सेकंड हां डायरेक्ट डेल्टा रो पीक एटी केते पाइबा x इक्वल टू l रे और f of x होची हमर एटा. तो नेक्स्ट सॉल्यूशन हो लैम्बडा v नोट बाय l इंटू साइन स्क्वायर पाई जस्ट x जगह l पुट करो तो l कैंसिल साइन स्क्वायर पाई माने साइन पाई रो होल स्क्वायर साइन पाई रो वैल्यू कते 0 तो 0 होबो. बाकी 0 आंसर अछि कि नै देखियार अछि हमको. ओके, फर्स्ट ऑप्शन अछि 0, सो 0 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा में the expectation value of x cap in the normalized state psi of p is x cap. Then the expectation value of x cap in the state psi of p is the iota by h cross px naught where x naught is a constant कौन हो. क्वेश्चन देखिए expectation value of x cap. तो हमें जनरली फॉर्मूला जानछंदी फॉर द स्टेट psi of p पई psi of p x cap psi of p ब्रैकेट divided by psi of p ब्रैकेट. जेहेतु एटा नॉर्मलाइज दीजी तो डिनोमिनेटर 1 है गला. सो x cap expectation this expectation equal to psi of p x cap psi of p. बट से क्वेश्चन में कौन दोची व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इन द स्टेट psi of p e to the power iota p x naught by h cross. Let this function is psi dash p. मो पारे स्पेस बेसी नहीं तेति पे तो psi dash p नेम ने नेली. ओके, psi dash p. तो क्वेश्चन ने कोन अछि ना psi dash एस्केप करिवे psi dash p ऑपरेट करिवे एस्केप psi dash p डिवाइड बाय
साइड एस पी ब्रैकेट साइड एस पी ओके सो आम चेक करिया जदि आम देखिया साइड एस पी आम कौन लिखिया साइड एस पी जदि आम केट नोटेशन दवा साइड एस पी केट इक्वल टू e to the power just a minute e to the power iota p x naught by h cross I of p यदि यार करेस्पोंडिंग ब्रा वेक्टर लिखली साइड एस पी केते हेबो ना e to the power माइनस आयोटा p x naught by h cross ओके psi of p ठीक अछि तो या को जदि आम दुटा मल्टीप्लाई करें दैट इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन चेक करिबा साइड एस पी psi of p जदि हम मल्टीप्लाई करछंती ताले सी 1 होची कोन पई ना e to the प्लस आयोटा और माइनस आयोटा मिसी 1 हे गला तो psi p है कि psi p रो ब्रैकेट 1 हो तो 1 हे जो ओके सो हम लिखिए फ्रॉम दिस condition we can write x cap equal to next expression equal to side s p x cap side s p फर्स्ट हमको x cap को ऑपरेट करार अच्छी साइड एस पी सहित सो x cap व्हेन ऑपरेट ऑन साइड एस पी तो x cap को हमें मोमेंटम एक्सप्रेशन लिखिया सो आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल p ऑफ साइड एस पी केते लिखिया ना e टू द पावर आयोटा p x नॉट बाय h क्रॉस psi of p ये प्रोडक्ट रूल पड़िबो सेंस से केते ना आयोटा h क्रॉस फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कांस्टेंट रहइबो तो e टू द पावर आयोटा p x नॉट बाय h क्रॉस होल इनटू आयोटा h x नॉट बाय h क्रॉस प्लस आयोटा h क्रॉस e to the power iota p x naught by h cross del psi by del p okay so ये देखो आयोटा h क्रॉस और आयोटा बाय h क्रॉस ताको हमें सिंप्लीफाई कर ले केते हेजिवो ना आयोटा स्क्वायर केते -1 सो h क्रॉस कैंसिल सो हेजिवो ये माइनस एक्स नॉट आउटे में छाड़ी देछंती साई ऑफ पी टा सो ये गला e टू द पावर आयोटा p x नॉट बाय h क्रॉस होल इनटू साई ऑफ p ठीक अछि प्लस ये देखो आयोटा सेकंड टर्म दा आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल p ताको हम लिखि रिबे केते आयोटा h क्रॉस डेल बाय डेल p को x कैप लिखियो ठीक अछि सो e टू द पावर आयोटा p x नॉट बाय h क्रॉस रहिला तो लिखे x कैप psi of p राइट सो एबे हमें ये जो टर्म टा पहले लेफ्ट साइड रे कोन थिला x कैप को ऑपरेट करिया थिला साइड एस पी ऊपर तो ऑपरेट करला परे आफ्टर ऑपरेशन वी गेट दिस रिजल्ट ये रिजल्ट को हमने की पुट करिया अछि दिस इक्वेशन रे तो हमें x कैप लिखिया एक्सपेक्टेशन पेमेंट को इरेज कर दूँ 1 सेकंड जस्ट सो x कैप एक्सपेक्टेशन इक्वल टू साइड एस पी प्लेस रे हमें कौन लिखि रिबा साइड एस पी प्लेस रे e टू द पावर psi of p e to the माइनस आयोटा p x नॉट बाय h क्रॉस और x कैप वन ऑपरेट ऑन साइड एस पी ता प्लेस से हम लिखि रिबा दीटा टर्म माइनस x नॉट e to the power आयोटा p x नॉट बाय h क्रॉस psi of p and plus अलग अलग हम करी लेखुची psi of p e to the माइनस आयोटा p x नॉट बाय h क्रॉस x e to the power ना आगो e to the power आयोटा p x नॉट बाय h क्रॉस x psi of p ठीक मैच कर दो ओके ठीक है so that's equal to
ये देखिए कलर चेंज कर e to the power minus iota p x naught ଆଉ e to the plus iota p x naught এটা କେତେ ହେଇଯିବ 1 ହେଇଯିବ ଆଉ minus x naught ଏଠି ବାହାରକୁ ଆସିବ so ହେଲା minus x naught bracket of psi of p plus ଏବେ ଦେଖ ଏଠି this e to the minus iota p x naught by h cross e to the iota p x naught by h cross 1 ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା psi of p x psi of p. Okay, so that's equal to minus x naught psi of p psi of केते 1 अब आम यहाँ ऑलरेडी जानते क्वेश्चन गिवन अच्छी से होची x कैप एक्सपेक्टेशन तो फाइनल जो x एक्सपेक्टेशन रो जो psi of p जो स्टेट देइथिला सेथिरे तार आंसर केते हेबो ना x कैप माइनस x naught तो याकू खोजिया कोडी अछि x के रेशियो माइनस x naught ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक अछि सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन let n cap let n state or ket vector denote the nth excited state of 1D simple harmonic oscillator given by this potential this Hamiltonian if the particle is initially in the state psi of t equal to 0 initially कोथरे अछि ना 1 by root 2 0 plus 1 by root 2 1 माने एठी 0 state means n equal to 0 और 1 state means n equal to 1 for harmonic oscillator problem the minimum time after which oscillation will again in this state माने केते समय परे again से state repeat होबो सेतिबे हमकू postulates of quantum mechanics रे हमें यूज नबा postulates of quantum mechanics रे कोन time evolution operator हमें ऑपरेट करिया when time evolution operator operates on psi of t equal to 0 that is e to the minus iota h cap t by h cross when this operate on 1 by root 2 0 plus 1 by root 2 1 state gives is equal to 1 by root 2 when this operate on 0 ket vector that means energy corresponding to first state non ground state so energy हमें केंति जानते हार्मोनिक ऑसिलेटर n plus half h cross omega तो n जगह 0 हमें पुट करले केते हो h cross omega by 2 so e to the minus h cross omega by 2 into t 0 ket plus 1 by root 2 e to the minus iota by h cross और h cap when operate on 1 means n plus 1 तो 3 by 2 हो n plus 1 पुट करिबा so 3 by 2 h cross omega into t state 1 that's equal to 1 by root 2 e to the power minus iota एठी h cross डिवाइड हेतला ओके h cross तो कटि जीवो तो रहिबो ओमेगा t by 2 0 factor plus 1 by root 2 e to the power minus iota 3 omega by 2 t set 1 तो ये होची वेव फंक्शन एट टाइम t दिस शुड बी इक्वल टू केते बा दरकार रिपीट होबा दरकार मींस 0 समय रे जोटा थिला स्टेट t समय पर भी सेम रहबा दरकार तो दैट शुड बी इक्वल टू 1 by root 2 0 state plus 1 by root 2 1 state that means याको जदि हमें कंपेयर करिबा दिरा सहित तो एठी ए टर्मटा शुड बी इक्वल टू 1 this term should be equal to 1 माने e to the power minus iota omega t by 2 should be equal to 1
and it will be minus iota 3 omega by 2t should be equal to 1. From these two we can write this minus iota omega t by 2 should be equal to, it is a minus iota 3 omega by 2. ताको लेफ्ट साइड को नहीं आसले e टू द पावर केते हेजबो 3 ओमेगा by 2 t iota minus iota omega by 2 t equal to 1. That implies e to the power 3 by 2 minus half is iota omega t equal to 1. 1 place time लिखे रिबा e to the power iota 2 pi or 2n pi, n equal to 1 iota 2 pi. So comparing both sides, omega t equal to 2 pi, so t time कितने है वो 2 pi by omega. So 2 pi by omega is the answer. So option D is correct. तो यहाँ पे गोटे शॉर्टकट मेथड भी अच्छी. शॉर्टकट मेथड कौन ना, टाइम पीरियड आफ्टर व्हिच द फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ is given by 2 pi divided by e2 minus e1. So 2 pi e2 means energy in fast excited state केते सेटा ना 3 by 2 h cross omega और e1 means ground state रे half h cross omega. That's equal to 2 pi divided by 3 by 2 minus 2 pi h cross, sorry h cross छाड़ दीजिए h cross, ताले ये वो कहते h cross omega. So h cross cancel out, so 2 pi by directly यदि formula मन रखियो directly कर परियो. Okay, next question जीवा में. Next question होची, the energy of fast excited state of a particle in 2D potential v of x होची एतिकी देइची, तो तार एनर्जी केते हेबो. ठीक अछि. सो हम पोटेंशियल हमें जानी v of x जदि रहा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन तार करेस्पोंडिंग एनर्जी केते हेबो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर रो, दैट इज n plus half h cross omega when n can take the value 0 1 2 and so on. but एठी जो पोटेंशियल देची v of x को देची ना हाफ m x square plus हाफ m 4y square, वो ताको मल्टीप्लाई कर देली. ठीक अछि. सो दैट्स इक्वल टू हाफ m x square प्लस हाफ m 4 जगह में 2 स्क्वायर y स्क्वायर लिखिबा. जदि मु कंपेयर करबी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर सहित, ताहले इठी ओमेगा तो नहीं, फर्स्ट टाइम 1 अच्छी 1 होल स्क्वायर. सो फर्स्ट बाई ओमेगा 1 हबो और सेकंड वेरिएबल y करेस्पोंडिंग ओमेगा होची 2 हो. ठीक अछि. सो यार कंप्लीट एनर्जी केते हेबो ना n1 प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा 1 प्लस n2 प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा 2. So n1 plus half h cross omega 1 value 1 put करो. next n2 plus half h cross omega 2 value 2 put करियो. that's equal to h cross टा बाहर को रखि दो केते हे जिवो ना n1 plus half plus 2 n2 plus 1 all into h cross. that's equal to n1 plus 2 n2 प्लस 3 by 2 h क्रॉस. ये आमर क्वेश्चन पचार फास्ट एक्साइटेड स्टेट, जब आम ग्राउंड स्टेट पचार n1 जगह 0 n2 जगह 0 पुट कर. तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट्स आमको चूज कर कौ कॉम्बिनेशन एनर्जीटा मिनिमम हो 0 0 छाड़ी देगी है. सो क्लीयरली जना पड़े यदि n1 जगह आम ये 1 लिखा n2 जगह 0 लिखा. सो एनर्जी केते हेबो n1 प्लस रे 1 इट 0, तो 1 प्लस केते 3 by 2 h क्रॉस. सो 2 एलसीएम 5 by 2 h क्रॉस. ओके.
5/2 h क्रॉस बट ये ओमेगा लिखी दीजिए भूल से ओमेगाटा हूँ 1 हम है 5/2 h क्रॉस हम सो ऑप्शन डी इज करेक्ट जदि आम ये n1 जगह 0 लिखुंट n2 जगह 2 लिखुंट सॉरी 1 लिखुंट n2 जगह ताले एनर्जी के चेक करदे n1 जगह 0 n2 जगह 2 ताले 2 + 3/2 h क्रॉस दैट इज के 7/2 h क्रॉस होची दैट इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी को बुझेबो सेटा ठीक अछि तो आमर आंसर हम 5/2 h क्रॉस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन होची नेक्स्ट क्वेश्चन होची द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम व्हिच पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय v of x इक्वल टू दिस बट कि आम जो प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व करते सेठी v of x केते ना हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बट x रेंज फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी माने ऑल ओवर स्पेस बट यही क्वेश्चन में पार्टिकुलरली जो x रो रेंजटा 0 रु इन्फिनिटी अच्छी मैंने यदि प्लॉट करवा ताले एमती ही प्लॉट हो x माने लेफ्ट साइड को जो x रो लेफ्ट साइड को फंक्शन होची इन्फिनिटी माने लेफ्ट साइड को फंक्शन कौन होची 0 हो जाउची यदि हम फंक्शन रिप्रेजेंटेशन देबे लेफ्ट साइड मींस x लेस देन 0 रे वे फंक्शन कौन हो जीरो आम कंटिन्यूटी कंडीशन जानते वे फंक्शन इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री तो बाउंड्री किए रहा x इक्वल टू 0 बाउंड्री सो x इक्वल टू 0 रे डेफिनेटली वे फंक्शन कौन हवा दरकार 0 होता दरकार तो आम ये कंपेयर करवा जो आम पढ़ी फुल हार्मोनिक ऑसिलेटर दैट इज फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी जो पढ़ते सहित कंपेयर करवा तो आम जानते साई ऑफ x sin x is something alpha by 2 to the power n factorial square root of pi all to the power 1/2 is the minus alpha square x square by 2 hn alpha x when n equal to starts from 0 to n equal to 0 1 2 and so on ठीक है ये पचारि एनर्जी आइगन वैल्यू ग्राउंड स्टेट ओके ओके ठीक है तो जब आम एन इक्वल आम 0 पुट कर एच एन आल्फा एक्स एन डिपेंडेंसी केवल एच एन जमा पड़ो सो एच एन आल्फा एक्स के 1 हो हार्माइट पॉलिनोमियल h0 एक्सटा 1 ना सो एन इक्वल जो आम 1 पुट कर h1 आल्फा एक्स के ना 2 आल्फा एक्स माने h1 एक्सटा के एक्स हुए ना सो जदि आम साइ 2x लिखा सॉरी साइ 1x माने n प्लस यदि 1 लिखा ताहले से समथिंग ये टर्मटा रहा आउ h1 आल्फा एक्स जगह 2 आल्फा एक्स लिखा तो एबे जदि आम x जगह 0 पुट करवा ताहले साइ 1x टा कौन हो 0 हम किंतु n जगह 0 पुट करले माने साइ 0x कैन नॉट बी 0 एट x इक्वल टू 0 सो ये सॉल्यूशन हो पारिबोनी तो सॉल्यूशन कोटा हो जो आम कंडीशन कौन कर एक्स जगह 0 रे साइ ऑफ एक्स 0 हवा दरकार तो ताहले n इक्वल टू 1 हो फास्ट सॉल्यूशन तमने ग्राउंड स्टेट ताहले n इक्वल टू आम 1 पुट करवा जस्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी पाई तो आम कंपेयर करवा n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा सहित कंपेयर करके लिखिलु सो n जगह जस्ट 1 पुट कर 1 प्लस हाफ के h क्रॉस ओमेगा तो 3/2 h क्रॉस ओमेगा होची आंसर दिस वन इज द आंसर 3/2 h क्रॉस ओमेगा और तो डायरेक्ट आम शॉर्टकट फॉर्मूला मन रखिपर एनर्जी फॉर हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन्स फॉर x ग्रेटर देन 0 पोटेंशियल v of x is half m omega square x square and for x less than 0 it is infinity so एनर्जी कितने है बोला 2n plus 3/2 h क्रॉस ओमेगा सो ये हमें डायरेक्टली n इक्वल टू 0 1 2 3 लिखे सो ये डायरेक्टली चेक करो n इक्वल टू 0 रे सो ये 0 हो कहते हैं 1 इक्वल टू 0 रे 3/2 h क्रॉस ओमेगा ग्राउंड स्टेट से फॉर्मूला मन रखीदे बेटर और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी 2n plus 3/2 h क्रॉस ओमेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
A particle of mass m is put inside a potential well ଦେଇଛି -L to L, then normalized ground state wave function ପଚାରିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଇଟା ସିମେଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ୱେଲ୍ କେସ୍। ସୋ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ୱେଲ୍ କେସ୍ରେ ୱେଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଜେନେରାଲି sin x ଯଦି 0 ରୁ L ରେଞ୍ଜ ରହିଲା ସେଟା ଆମେ ଏମିତି ଲେଖୁ 2/L square root cos n pi x by L for n equal to 1 3 5 and so on, odd number pi even pi 2/L sin n pi x by L n equal to 2 4 and so on। ସେଠି ପଚାରିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ନର୍ମାଲାଇଜ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍। सो n इक्वल टू आम ग्राउंड स्टेट पाई n इक्वल टू 1 लिखा। सो n इक्वल टू 1 माने ऑड नंबर तापे आम डायरेक्टली 2 बाय बट ये लेंथ टा केते अछि -L to L। सो विड्थ ऑफ द वेल इज 2L स्क्वायर रूट cos n means 1 pi x by 2L। सो दैट्स इक्वल टू 2 to कैंसिल होला 1/L स्क्वायर रूट cos pi x by 2L। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1/L cos pi x by 2L। अच्छा ऑप्शन तो 2L नहीं, cos ऑप्शन 2L नहीं, मतलब जो बाय मिस्टेक हो 2L देवा कथा है ना। ग्राउंड सेट पचार ना पुणी n रखी सी, तो ऑप्शन ने कौन सी ऑप्शन नहीं एटा ठीक अच्छे। तो आम चूज कर बेस्ट ऑप्शन आम ऑप्शन ए चूज कर राइट। कहीं 1/L स्क्वायर रूट ऑप्शन डी रे भी cos अच्छी किंतु से 1/2L स्क्वायर रूट अच्छी। तो एक्जाक्ट आंसर तार यहाँ हम 1/L स्क्वायर रूट cos pi x by 2L, बट बेस्ट ऑप्शन आम चूज कर 1/L स्क्वायर रूट cos n pi x by L। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम if AB commutator is bracket is iota A where A is constant, then uncertainty relation for observable A and B is written as। तो हमको अनसर्टेनिटी रिलेशन टा लिखियार अच्छी, तो ये तो डायरेक्ट बुक रो क्वेश्चन है ना। सो द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इन द ऑब्जर्वेबल A and B स्क्वायर is greater than equal to फॉर्मूला हो चुकी तो -1/4 expectation value of commutation AB square। जस्ट फॉर्मूला मन थे करिए। ओके, सो डेल्टा A स्क्वायर डेल्टा B स्क्वायर इज ग्रेटर देन -1/4। ये आम ए बी रो कम्बिनेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन ना, आयोटा ए रो स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4 आयोटा ए रो स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर के -1, सो -1 ए स्क्वायर। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू केते होगला ना ए स्क्वायर बाय 4। तो यदि आम ये लेफ्ट साइड स्क्वायर अच्छी, सो डेल्टा ए डेल्टा कैपिटल बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a by 2। ऑप्शन B is correct। ओके, a by 2 ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थी 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स ऑफ मास m are confined to 1D box of length L but otherwise free। Okay, assuming no interaction, the energies of lowest 2 energy eigenstate in unit of pi square h cross square by 2ml square। कहता 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल देछि 1D बॉक्स रे एंड नॉन इंटरैक्टिंग। ओके, सो 1D बॉक्स रो कंडीशन मन पके 1D बॉक्स 0 to L जदि आम लेंथ नेबा ताहले वेव फंक्शन तो बट वेव फंक्शन 2/L स्क्वायर रूट sin n pi x by L, बट वेव फंक्शन दरकार नहीं, एनर्जी एक्सप्रेशन जानते हो। सो एनर्जी एक्सप्रेशन केते ना n स्क्वायर पाई स्क्वायर h को स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर h को स्क्वायर बाय 2ml ताको मु अल्फा ने नउछ। ओके, सो n स्क्वायर अल्फा लिखि दबो। तो पाई स्क्वायर h को स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर एटा अछि, ताको हम अल्फा धर देले। ओके,
So for ground state there is n equal to 1, the energy kete hebo alpha. For first excited state energy 2 रो square kete hebo 4 alpha. For third excited state kete hebo 3 square 9 alpha. Okay, एतिकी for single particle जो था तार possible energy alpha 4 alpha and 9 alpha होता है. But it कौन देखी ना 3 identical particles होची और spin half particles. Spin half particle means fermions. ताले Pauli's exclusion principle follow करिवो like electron, that is हमें 3टा particle को हमको सजेवार अछि. तो हमें n equal to 1, n equal to कौन अछि 2 अछि. तो हमें फर्स्ट लेवल रे स्पिन अप स्पिन डाउन वाला दीटा इलेक्ट्रोड टुगेदर रखिकी आ गोटे आम n equal to 2 रे रखी पारिबा. करेक्ट. तो यही कॉम्बिनेशनटा होची मिनिमम कॉम्बिनेशन एनर्जी कॉम्बिनेशन हम. तो यार करस्पोंडिंग एनर्जी केते हो, यार एनर्जी केते अल्फा, ये होची 4 अल्फा. तो जेहेतु दीटा पार्टिकल फास्ट हेले तो 2 अल्फा प्लस गोटे पार्टिकल अछि ऊपर सब करबो केते हेबो 6 अल्फा. ये होची कोन ग्राउंड स्टेट. तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट पई केते लिखि परिबा ना गोटे इलेक्ट्रॉन फास्ट सेल रे माने फर्स्ट लेवल रे रहइबो, अनदर इलेक्ट्रॉन हम दीटा में सेकंड n equal to 2 लेवल रखिबा. ताले केते हेबो कैलकुलेशन ना अल्फा ये होची 4 अल्फा. ओके, सो एनर्जी फास्ट एक्साइटेड स्टेट इक्वल टू अल्फा प्लस 2 into 4 माने 8 अल्फा इक्वल केते 9 अल्फा. सो 6 आउट 9. तो ग्राउंड स्टेट पचारि थिला सिस्टम रो आ फास्ट एक्साइटेड स्टेट रो. तो 6 and 9 हबो ऑप्शन बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप क्वेश्चन अछि. 2 spin half fermions of mass m are confined to move in 1D infinite potential with L, potential of with L each. If the particles are known to be in spin triplet state, okay, the ground state energy in the unit of pi square h cross square by 2m L square. So ये भी हमें अल्फा समझना. स्पिन ट्रिपलेट स्टेट्स मीन्स 2 फर्मियन अच्छी. तो S1 इक्वल टू केते हाफ, S2 केते हाफ. तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्पिन पॉसिबल केते हेबो ना 0 ही पारे 1 ही पारे. तो यार करेस्पोंडिंग ms रो वैल्यू 0, यार करेस्पोंडिंग ms वैल्यू केते हेबो 1 0 -1. तो 1 1 1 0 and 1 -1. So this is a spin triplet states. स्पिन ट्रिपलेट स्टेट रे कौन कॉम्बिनेशन में करि परिबा ग्राउंड स्टेट बुझी. तो ओके, ग्राउंड स्टेट पर एठी हमें दीटा जो स्पिन अप एंड डाउन को गोटे स्टेट रखिबानी है. एमती हमें कॉम्बिनेशन कर परिबा. जेमती कि हमें फॉर एग्जांपल 1 स्टेट को यदि मु लिखिबी 1 स्टेट को हमें यदि लिखिबा ताले हमें लिखिए 1 स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. माने दीटा सेम स्पिन अप स्टेट रे. तो स्पिन अप एंड अप दीटा गोटे स्टेट रही परबो ना. सो हमें n इक्वल टू गोटे को यदि 1 रखबे ताले n इक्वल टू अनदर लिखिए. ठीक है जी. सो एनर्जी केते हो एठी अल्फा, एठी केते 4 अल्फा. सो आंसर हो 5 अल्फा टोटल. दीटा पार्टिकल जी 5 अल्फा. Next question. The energy En of quantum system in the potential V of x equal to cx to the power 6. पहले for large value of quantum number n, this energy varies like option देगी. सो ये WKB approximation नो क्वेश्चन. तो जदि हमें क्वांटाइजेशन कंडीशन आम यूज करिबा दैट इज 2m e minus v of x square root dx is equal to n plus half h cross when n can take value 0 1 2 3. n is the quantum number. ओके, याकू सॉल्व करिकी हमें एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n पावर केते हमें सॉल्व करिया. अदरवाइज हमें शॉर्टकट मेथड्स गोटे मन रखिबा. इफ पोटेंशियल v of x
is some constant lambda into x power n ଅଛି m ଅଛି x power m. Then corresponding energy proportional to hobo lambda power 2 by m plus 2 or n power 2m by m plus 2. यदि हमको m पावर पचारछि n पावर पचारछि तो m प्लेस रे केते लिखि परिबा एटी x टू द पावर m हम क्वेश्चन रे केते अछि 6 अछि m प्लेस रे. So energy proportional to n power 2 into 6 by 6 plus 2 proportional to n power 12 by 8. So 4 रे हमें काटिले केते हो 3 by 2. So answer हो e proportional to n power 3 by 2. n power 3 by देखिए ऑप्शन n power 2 by 3 होची 3 by 2 by ए क्वेश्चन मत लागुची माने भूल अछि ऑप्शन कोनोसी भी ऑप्शन मैच करू आंसर सहित. एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n पावर 3 by 2 होबो राइट मिस्टेक अछि ऑप्शन में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया. नेक्स्ट a particle spin half is found in the state this. The probability of finding the particle in spin down state. Probability of finding the particle in spin down state. That means this function, this given suppose psi achi, this psi ket can be written as a linear combination of spin up and spin down state. So probability of getting the system in the state spin up is c1 mod square by c1 square plus c2 square. ये तो फॉर्मूला पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स तो या होगी. सो साई होची केते ना आयोटा बाय नहीं आयोटा -2 रो कॉलम वेक्टर जस्ट कैन रिटन ए c1 अप स्पिन स्टेट होची 1 0 और डाउन स्टेट होची 0 1. So that implies iota -2 equal to इधर में मल्टीप्लाई करके c2 कंबाइन करिवा तो एठो क्लियरली पाइबा c1 इक्वल टू केते ना iota c2 इक्वल -2. So probability of the system to be in up state spin see down state बुझाछि ना. ओके सॉरी spin down state. Down state means I can change करेगा तो second just spin down है c2 mod square है by c1 mod square plus c2 mod square. Down state equal to c2 mod square by c1 square plus c2 mod square. That's equal to c2 की -2 रो स्क्वायर कितने 4 by iota mod square means 1 plus 4 अरे 4 by 5 4 by 5 आंसर हो. ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particular wave function of 1D oscillator is given by this. The expectation of value of energy in the unit of half h cross omega. तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर देखो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर केते क्वेश्चन अछि 3-4टा पाखा क्वेश्चन हमें करलेनी. सो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर हमें जानि चंती फॉर द स्टेट n corresponding एनर्जी केते हेबो ना n plus half h cross omega where n can take the value 0 1 2 7. सो एठी 0 स्टेट देछि आ 0 अछि आ 1 स्टेट अछि और 2 अछि. तार corresponding एनर्जी E0 केते हेबो तले n जगह 0 तो हाफ h क्रॉस ओमेगा. E1 केते एनर्जी 3/2 h क्रॉस ओमेगा. E2 केते एनर्जी हो 5/2 h क्रॉस ओमेगा. तो 0 1 2 स्टेप पे करस्पोंडिंग एनर्जी हम लिखि देलु. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी पचारछि. तो जदि हम गोटे मेथड हम शिखिबा सपोज साई इज ए वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ c1 phi 1
C2 phi 2 and C3 phi 3. Then expectation, energy expectation can be 10 as summation of probability of ith state with corresponding energy of ith state. probability into eigenvalue आम लिखिपर केतबेले लिखिब एटा जदि phi 1 phi 2 and phi 3 are the eigen state of energy operator or any measuring operator. धर आम ये लिखुँगी LZ रो एक्सप्रेशन लिखुँगी तो से आम यही फर्माट रे केतबेले लिखिपर probability into eigenvalue केतबेले लिखिपर जेतबेले phi 1 phi 2 and phi 3 are the eigen state of that operator होइतिबा दरकार. तो डेफिनेटली आम जानी एनर्जी रो जो आइगन स्टेट हो 0 1 2 3 आर द आइगन स्टेट्स. ओके सो प्रोबेबिलिटी हम फॉर्मूला कौन जानते फर्स्ट स्टेट तो दिस इक्वल टू लिखी P1 E1 प्लस के P2 E2 प्लस P3 E3. तो पार्टिकुलर फॉर दिस स्टेट साइ तो जनरल मुझे लिखुची आम क्वेश्चन जोटा तार सॉल्यूशन करवा. तो प्रोबेबिलिटी of the system to be in phi 1 state कितने बना C1 mod square by C1 square plus C2 square plus C3 mod square into corresponding energy plus similarly P2 जगह कितने लिखवा C2 mod square by summation of all coefficient square or addition रहला and so on. ठीक अच्छे तो सही फॉर्मेट आम ये यूज करवा. ये कौन अच्छी स्टेट स्टेट हम स्टेटा को कॉपी पेस्ट कर ली साइ 0 माइनस 2 आयोटा 2 साइ अच्छी 0 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 गेट 2 ठीक है वेरीफाई कर दो ठीक अच्छे कि 0 माइनस 2 आयोटा प्लस 2. ओके सो यार एनर्जी एक्सपेक्टेशन केते हेबो ना प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू. सो यार कोएफिशिएंट केते अछि ना 1 डिवाइडेड बाय सब कोएफिशिएंट रो मोड स्क्वायर रो एडिशन 1 प्लस माइनस 2 8 रो तेबो 4 प्लस 4 इनटू एनर्जी हाफ h क्रॉस ओमेगा माने ई 0 प्लस नेक्स्ट एमती C2 मोड स्क्वायर माने केते 4 बाय 1 प्लस 4 3 by 2 h cross omega plus next कहते 4 by 1 plus 4 5 by 2 h cross omega. तो 4 plus 8 plus 1 9 तो 1 by 9 सब हमें कॉमन नवा 1 by 9 कॉमन नहीं गली h cross ओमेगा बाई 2 भी हमें कॉमन नेले ताले केते रहला 1 प्लस 4 into 3 कहते 12 प्लस 20 है ना. सो केते गला 20 प्लस 12 32 प्लस 1 33 by 9 into हाफ h प्लस ओमेगा 3 रे काटिले केते 11 by 3 हाफ h क्रॉस ओमेगा हाफ h क्रॉस ओमेगा इतने लिखु छु आंसर तो हाफ h क्रॉस ओमेगा रे मागिची इन टर्म्स ऑफ हाफ h क्रॉस ओमेगा तो आंसर केते हो 11 by 3 हो. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप रो ए पार्टिकुलर वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस वन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ LZ. तो आम जानी वेव फंक्शन टू हाइड्रोजन एटम रो साइ इज कैरेक्टराइज बाय 3 क्वांटम नंबर n l m m सब n l m देछि क्वेश्चन रे. तो LZ रो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कौन बाहर करबा सेम प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू इट इज आइगन वैल्यू केते m h क्रॉस. ओके सो स्टेट आम लिखिबा स्टेट को लिखु छु साइ के देछि psi 200 plus psi 211 plus 3 into psi 310 plus root 2 psi 21 minus 1. Okay.
सो एलजेड एक्सपेक्टेशन आम डायरेक्ट लिखिपर 1 बाय माने यार कोएफिशिएंट स्क्वायर c1 स्क्वायर बाय सो ऑल कोएफिशिएंट स्क्वायर एडिशन माने 1 प्लस यार केते 4 1 प्लस 4 प्लस 3 into 3 9 प्लस 2 ताले केते हैला 16 ओके ताले 1 by 16 into mh क्रॉस एटी m रो वैल्यू केते 0 अछि n l m लास्ट नंबर टा होची m को रिप्रेजेंट 0 into h क्रॉस प्लस नेक्स्ट टाइम को देखिए 4 by 16 mh क्रॉस माने हमरे बोले हम केते लिखिया 1h क्रॉस प्लस 9 by 16 एटी m रो वैल्यू नेक्स्ट 0 अछि 0 रह गेला 0h क्रॉस प्लस नेक्स्ट रूट 2 स्क्वायर 2 by 16 माइनस h क्रॉस m रो वैल्यू -1 ओके सो एलजेड एक्सपेक्टेशन इक्वल टू दीटा तो 0 0 हो गला ये हमें कंपेयर कर लिखा 4 - 2 के 1 by 2 by 16 हाँ 2 by 16 h क्रॉस इक्वल टू h क्रॉस by 8 इज द आंसर सो ऑप्शन डी करेक्ट सॉरी ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए eigenvalue of LZ operator in the state psi 410 in hydrogen atom again hydrogen atom पचास so directly LZ when operated on psi gives rise mh cross psi so it m खोजेर अछि so m value केते 410 एटी n l m value देछि तार m value तो 0 so 0 होबन सर LZ operator means mh cross. Okay, next question. Next question. The ground state energy of 1D system described by the potential V of x देछि एति तो केते हेबो क्वेश्चन रो ए क्वेश्चन पे हमें गोटे फॉर्मूला शॉर्टकट अच्छी मन रखीदे हो बट आम जनरल टेक्निक रे भी सॉल्व करिया एमती हो सो जदि पोटेंशियल v of x गिवन अच्छी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर ठीक अच्छे तो तापाई स्क्रोडिंजर इक्वेशन आम के लिखू d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस 2m e माइनस गोटे कम कर जो लेंदी न होगापाई हाफ m ओमेगा स्क्वायर टू आम आल्फा धर नौ आल्फा एक्स स्क्वायर धर नियो आल्फा एक्स स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0 आम स्क्रोडिंजर इक्वेशन जानते डी स्क्वायर साई बाय डी स्क्वायर प्लस 2m e माइनस v बाय एच क्रॉस स्क्वायर ठीक अच्छे तो यार सॉल्यूशन कला पाऊ एनर्जी केते En इक्वल टू n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा बट एठी जो पोटेंशियल स्लाइड चेंजेस अच्छी पोटेंशियल तो पोटेंशियलिटी कौन अच्छी ना v of x पोटेंशियल अच्छी v of x इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ax प्लस b ठीक अच्छे सो याको आम परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करिया फास्ट हाफ m ओमेगा स्क्वायर तो अल्फा लिखि दूँ अल्फा ताको लिखी मु एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बाय 2 इंटू एक्स प्लस गोटे ए स्क्वायर बाय 4 मु कली एडजस्ट तो लिखी ताले माइनस ए स्क्वायर बाय 4 आ गोटे बी थिला बी रहिला समथि सो नेक्स्ट स्टेप रे लिखि अल्फा इंटू ए तीनटा टर्म देखिले लिखिबा ताको एक्स प्लस ए बाय 2 रो होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बाय 4 ओके ये होची पोटेंशियल न्यू पोटेंशियल v of x तो या पाई करस्पोंडिंग स्क्रोडिंजर इक्वेशन हम लिखिया ताले कोन स्क्रोडिंजर इक्वेशन या पाई रहइबो ना d स्क्वायर साई बाय dx स्क्वायर प्लस 2m e माइनस v तो e माइनस v माइनस e माइनस
अल्फा होल इंटू के ना एक्स प्लस ए बाई टू होल स्क्वायर माइनस अल्फा होल इंटू बी माइनस ए स्क्वायर बाई 4 ये बाई के एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0 सो ये लिखे लेट दिस ई माइनस अल्फा इंटू बी माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू हम ई प्राइम दे देला ना ओके ई प्राइम ये कांस्टेंट ना बी आउ ए कांस्टेंट अच्छी सो हमें ताको कांस्टेंट ई प्राइम दे देले आउ दिस एक्स प्लस ए बाई 2 इक्वल हम एक्स प्राइम नेले सो डी एक्स केते हो ना डी एक्स प्राइम हो सो करेस्पोंडिंग डी बाई डी एक्स स्क्वायर ऑपरेटरटा सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स डेस प्राइम स्क्वायर है जो सो इन एक्स डेस प्राइम स्क्वायर हमें लिखिए यदि तो हम डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स डेस प्राइम स्क्वायर प्लस 2m ई जाकर केते लिखिबा ई डेस माइनस कौन हो अल्फा एक्स प्राइम स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ताले यार एनर्जी में केते लिखिबा ई डेस इक्वल टू यदि कंपेयर करिबा एडी देखो कलर चेंज कर दीजिए गोटे ई डेस माइनस अल्फा एक्स डेस स्क्वायर सेम कथा ये लिखा है ई माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अच्छी तो तार करेस्पोंडिंग एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा तो यार करेस्पोंडिंग एनर्जी भी सही समान रहिबो केते रहबो ना एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा रहिबो बाकी ई डेस रो वैल्यू केते लिखिया हमें ई डेस होची ई माइनस ओके सो ई माइनस अल्फा होल इनटू 40 सेकेंड हाँ बी माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एन प्लस हाफ एच क्रॉस सी पचार ग्राउंड स्टेट रखते हे ठीक अच्छे ग्राउंड स्टेट ताको मुझे इरेज कर लिखुची स्पेस नहीं मो पाखे ओके ग्राउंड स्टेट में क्वेश्चन पचार तो ग्राउंड स्टेट में एन इक्वल के 1 पुट करिबा सो एनर्जी केते हेबो एटा को आर पट साइड प्लस हो जिवो सो हाफ एच क्रॉस ओमेगा ये वाला हाफ एच क्रॉस ओमेगा राइट हैंड साइड प्लस अल्फा अल्फा मीन्स केते हाफ एच क्रॉस ओमेगा होल इनटू बी माइनस ए स्क्वायर बाई 4 तो ये खोजार अच्छी कोडी अच्छी मैंने हाफ एच क्रॉस ओमेगा प्लस मैंने हाफ एच क्रॉस ओमेगा कॉमन जो बी माइनस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक अच्छे तो यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट में फॉर्मूला मुझे कहीदेवी एत लेंथी प्रोसेस कर एग्जाम में टाइम नथिबो तो तापाई शॉर्टकट फॉर्मूला मुझे कहीदे कौन शॉर्टकट फॉर्मूला हो तो मन रखियार अच्छी यदि पोटेंशियल वी ऑफ एक्स रहा लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तार करेस्पोंडिंग एनर्जी हूँ एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस सी जो प्लस सी ताले प्लस सी जो माइनस सी ताले माइनस सी बट ये जो प्लस और माइनस बी थी फिर भी ये माइनस हम ना से अनुसार भी डायरेक्टली हमें चेक कर पार बी स्क्वायर मीन्स एक्स रो कोएफिशिएंट आउ ए हूँ एक्स स्क्वायर जो कोएफिशिएंट ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन और केतटा क्वेश्चन देखिए दुई ओके और दुईटा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन consider a 3D isotropic simple harmonic oscillator the degeneracy of third excited state हमें डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला में मन रखिए दैट इज n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 2 ये शॉर्टकट फॉर्मूला पर 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर 2D था तो n प्लस 1 बाई 2 लिखता है ओके तो n का थर्ड एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 0 फर्स्ट एक्साइटेड n इक्वल टू 1 सेकेंड n इक्वल टू 2 थर्ड 3 थर्ड एक्साइटेड तो 3 प्लस 1 होल इंटू 3 प्लस 2 बाई 2 तो कहते 4 इंटू 5 बाई 2 इक्वल टू 10 हम आंसर ओके 10 हम आंसर जो मैं एक्जाक्टली सॉल्व करने चाहूँ यहाँ ताले
आमको बुझाइबा पड़ो 3D आइसोट्रोपिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रो एनर्जी एक्सप्रेशन कौन हो ये हम पूरा एक्जाक्टली आम लिखा चाहिए ताले nx प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा प्लस ny प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा आइसोट्रोपिक अच्छी सब ओमेगा समान रही है ना माने ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड अलग अलग हम ना सो आम लिखिए तक मिसेकी nx प्लस ny प्लस nz प्लस के 3/2 h क्रॉस ओमेगा अब nx प्लस ny प्लस nz को हम n लिखिली n प्लस 3/2 h क्रॉस ओमेगा तो ग्राउंड स्टेट पर n इक्वल g 0 तो ऐसी पहुँचा थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स ताले n इक्वल के 3 तामे आम nx प्लस ny प्लस nz रो डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखा और केतरा कॉम्बिनेशन रे n इक्वल 3 बाहर तार मिसिक दाम 3 से डिजेनरेसी कहबा तो आम लिखिए ये देखिए nx ny nz तो आम लिखा 3 0 0 एमती पारे 0 3 0 0 0 3 पारे आ कौन हो पार 2 1 0 1 2 0 या फास्ट 0 रखिकी 2 1 या 0 रखिकी 1 2 नेक्स्ट 2 0 1 1 0 2 और 1 1 1 हो पारे केतटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके तो 10 डिजेनरेसी रही ठीक अच्छे ये ऑप्शन बी करेक्ट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लास्ट ओके लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज नॉट हर्मिशियन ऑपरेटर देछि हर्मिशियन रो कंडीशन तो इंटीग्रेशन वाला कंडीशन अछि ता ऊपर जाउनी मो तो हमको जस्ट मन रखे अछि d/dx रो होल डेगर ता केते ना -d/dx हमें हर्मिशियन केते बेला कहबा जदी a डेगर इक्वल टू a एन ऑपरेटर a cap is said to be Hermitian if a dagger equal to a cap होबो सो पचाची नॉट हर्मिशियन तो ऑप्शन एटा फास्ट चेक करिया आयोटा d/dx रो डेगर डेगर हेले जो आयोटा अछि नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तर कंजुगेट होबो सो माइनस आयोटा d/dx ऑफ डेगर से केते जो माइनस d/dx रो माइनस होबो ना माइनस नो प्लस हे गेला आयोटा d/dx तो ये हर्मिशियन तो हमको देखा हो क्लियरली ऑप्शन d/dx इज नॉट हर्मिशियन है ना तो भाई d/dx होल डेगर इक्वल टू माइनस ऑफ सी हमने स्क्यू हर्मिशियन सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बाकी अदर ऑप्शन जोड़ा अच्छे तो नीचे चेक कर ओके सो थैंक यू एवरीवन यदि किसी बाय मिस्टेक किसी कैलकुलेशन मिस्टेक कौन से मतलब हो जाए कमेंट सेक्शन में जनइब और जो न बुझी पार भी कमेंट सेक्शन में जनइब और टेलीग्राम मोर गोटे चैनल अच्छी SSP फिजिक्स एस्पिरेंट को लेकिन से टेलीग्राम चैनल जॉइन हो समस्ते और से डायरेक्टली डाउट पचारि पारे है कि तो जब मो नॉलेज से आसो मुझे एन सॉल्यूशन करके देवी ना अदर ग्रुप जो मेंबर अच्छा से भी सॉल्व करके देवे ओके आम गोटे इंटरेक्शन करेंगे ओके थैंक यू सो मच।